Good morning, class. I hope you all are fine and you have watched all the videos that we have discussed regarding the paper supply chain analytics. We have discussed all the practice questions of all the units along with the two case studies. Okay. From today, we'll be starting our paper supply chain management. I'm starting with the case study discussion. Okay. So let's get started. So this is the case. Okay. So this is the case number 1 that I have prepared for you. So the case is saying that you have been designated as a supply chain consultant for a multinational retail corporation. Okay, that is currently facing difficulties in efficiently managing its supply chain, है ना? तो आप किसी कंपनी के क्या हो सप्लाई चेन कंसल्टेंट हो और आपकी कंपनी में जो है क्या हो रहा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इश्यू आ रहा है ना? प्रॉपर्ली इफेक्टिवली वो मैनेज नहीं हो पा रहा. तो द कंपनी ऑपरेट्स बेसिकली in various geographical areas and is encouraging challenges pertaining to inventory management. कहाँ issue आ रहा है? Inventory management में, transportation में, coordination among the supply chain collaborators. Also, you need to create an all encompassing strategy, है ना? ऐसा कोई strategy इसमें सारे issues जो है वो solve हो जाए to tackle the supply chain challenges encountered by the company. ठीक है, आपको ऐसा कुछ बताना है जिससे सारे issues, ये 3 issue थे, inventory management, transportation और coordination among the supply chain collaborators. Okay, so you need to apply the pertinent principles from the course curriculum encompassing inventory management. जो आपने पढ़ा inventory management वो discuss करना है, transportation, risk and uncertainty, supply chain coordination, strategic sourcing and big data analytics. Okay, you have to offer a concrete instances and tactics to enhance the operational efficiency of the supply chain. ठीक है, तो आपको एक concrete जो है वो बनाकर देना है कि how you will be managing and how you can enhance the operational efficiency. Okay, how you can enhance the operational efficiency of the company. ठीक है, तो आपको ये कर देना है. ठीक है, let's see how we can answer this question. So you may start the answer. You know, the first issue was regarding the inventory management. तो आपको शुरू inventory management से करना है कि inventory management से सबसे पहले you can suggest the company that what they can do is, yes, what they can do is they can use ABC analysis. If you remember, we have discussed in the class what is ABC. ABC is actually the segmentation of the inventory based on their value. Okay, so ABC analysis can be done to categorize the inventory based on the value एंड इम्पोर्टेंस, है ना? जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल है वो ए कैटेगरी रहता है जिसकी सबसे ज्यादा सुपरविजन की जाती है ना? जो थोड़ा उससे कम इम्पोर्टेंस का रहता है और थोड़ी कम वैल्यू की रहती है उस वो कैटेगरी बी होता है और अकॉर्डिंगली इन कंपैरिजन टू ए बी पर सुपरविजन जो रहता है वो थोड़ा कम रहता है, थोड़ा लीनियंट सुपरविजन रहता है. नेक्स्ट होता है सी कैटेगरी जो कि काफी मतलब सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री टाइप होती है और प्लस उसका वैल्यू भी जो है वो काफी कम है, वो कोर एरिया नहीं है उस कंपनी का, है ना? तो एक ये होता है ना, तो यू कैन जस्ट सजेस्ट द कंपनी विच इज फेसिंग द इशू ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कि आप क्या करो कि एबीसी एनालिसिस कर लो. ठीक है, इम्प्लीमेंट डिफरेंट इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर्स फॉर ईच कैटेगरी सच एज रेगुलर ऑडिट करवाओ, आप ऑटोमेटेड रिकॉर्ड सिस्टम्स यूज करो, है ना? इवन फॉर ऑल द लो वैल्यूड आइटम्स ऑल्सो, राइट? अदर देन दिस व्हाट कैन बी डन इज जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी. तो हमने बहुत डिस्कस किया है कि यू कैन इफ यू वांट टू रिड्यूस द excess inventory, the carrying cost and the ordering and all these costs, then you can go for the just in time principle to reduce the excess inventory and improve the turnover. Okay, third is vendor managed inventory. Vendor managed inventory का मतलब क्या है कि you can collaborate with the key suppliers to manage inventory levels, right? So suppliers क्या करेगा कि आपके इन्वेंट्री लेवल को देखता रहेगा और अकॉर्डिंगली जब उसे लगेगा कि ओके इट इज बिलो द लिमिट और व्हाटएवर, देन दे विल ऑटोमेटिकली बी सप्लाइंग टू यू. इसका मतलब क्या है कि आप अलग से उसको कंट्रोल नहीं करोगे, रादर सप्लायर विल आल्सो हैव द ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल ओवर दैट कि he'll be able to monitor that, है ना? कि जैसे ही इन्वेंटरी लेवल लगेगा कि वो खत्म हो रहा है वो रिप्लेनिश बैक मतलब स्टॉक फिर से आपको भर देगा, है ना? तो ये आप कर सकते हो. तो वेंडर मैनेज इन्वेंटरी इसको कहते हैं ना, जिसमें आप वेंडर को मैनेज करने के लिए दे रहे हो. थर्ड हो गया. फोर्थ हो गया आपका सेफ्टी स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन. सेफ्टी स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है ना, आप डेटा एनालिटिक्स वगैरह यूज करते हो और देखते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा एंड ऑल दिस आप देखते हो कितना स्टॉक जो है हमारे पास रहना चाहिए, कितना हमारा लीड टाइम है ना? अकॉर्डिंग टू आवर लीड टाइम देयर शुड बी
like the proper stock maintained, okay, so that आपको कभी भी stock out वाला situation ना हो and customer remains satisfied, okay. तो दिस वे यू कैन जस्ट डील विद द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ओके. तो चार पांच पॉइंट मैंने दिया है यहाँ पे, एबीसी एनालिसिस, जस्ट इन टाइम, वेंडर मैनेज इन्वेंट्री और सेफ्टी स्टॉक, इसमें से आप कोई भी तीन चार पिक कर सकते हो. नेक्स्ट इशू इनके पास क्या था, नेक्स्ट इशू इनका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड था. नाउ लेट्स डील विद ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन में यू कैन जस्ट सजेस्ट द कंपनी to use route optimization. Route optimization means like you can use some data analytics software or tools like transportation management systems, which which is basically the algorithm to calculate the best route, the shortest route. Okay, taking into account all the related factors like the traffic, like traffic condition or transportation cost, the fuel cost, and all these things will be taken into account. And afterward, वो mathematical algorithm बनता है जिससे कि निकालते हैं कि कौन सा route will be the ऑप्टिमम रूट. ओके, नेक्स्ट हो जाता है मोड सिलेक्शन. मोड सिलेक्शन का मतलब है आप कौन से ट्रांसपोर्टेशन को सिलेक्ट करते हो. जब आप ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्ट करते हो तो आपको सारा कुछ ध्यान में रखना है, मतलब आपको डिस्टेंस, द वॉल्यूम, कितनी अर्जेंसी है. अगर अर्जेंसी नहीं है तो यू कैन गो बाय रोड, अगर अर्जेंसी है देन यू हैव टू यूज दिस फ्लाइट और समथिंग लाइक दैट. ओके, तो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करो तो अकॉर्डिंग टू द अर्जेंसी, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, है ना. तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट द प्रॉपर मोड, है ना. तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए. आपका हब उसे मतलब जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वगैरह है वो इस एरिया में होना चाहिए कि वहां से like all the hubs are available and आप proper ये ट्रांसपोर्टेशन चूज कर रहे हो, ठीक है. नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव ट्रांसपोर्टेशन. कोलैबोरेटिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि आप कोलैबोरेट करके रखे हो कि सप्लायर्स के साथ आपने कोलैबोरेट कर रखा है शिपमेंट्स के साथ, तो हर जगह आपको अपनी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की जरूरत नहीं है. यू कैन यूज द आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स एज वेल, राइट. तो ये होता है कोलैबोरेटिव ट्रांसपोर्टेशन. तो आप ट्रांसपोर्टेशन को बेस्ट करने के लिए या सही करने के लिए यू कैन जस्ट यूज दिस, है ना. यू कैन सजेस्ट द कंपनी. देन थर्ड इनका इशू क्या था, जस्ट सी द थर्ड इशू वाज कोऑर्डिनेशन अमंग द सप्लाई चेन कोलैबोरेटर्स, है ना. जो सप्लाई चेन कोलैबोरेटर्स है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है. तो आप क्या कर सकते हो, आप एक कोलैबोरेटिव प्लानिंग बना सकते हो. कोलैबोरेटिंग प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड रिप्लेसमेंट बोलकर होता है एक टूल जो कि आपको क्या करेगा, वो प्लान कर देगा कि which collaborator or which party have to do what work and all these things will be divided. And then forecasting is also done कि आप मतलब उनके लीड टाइम के हिसाब से और ऑन द पास्ट हिस्ट्री, तो उस हिसाब से फोरकास्टिंग भी हो जाता है एंड रिप्लेसमेंट भी रहता है, राइट. तो कोलैबोरेटिव प्लानिंग, फोरकास्टिंग, रिप्लेसमेंट विच इज CPFR कैन बी यूज्ड टू शेयर द फोरकास्ट. मतलब ये कब रीच करेगा, मतलब टू शेयर द बेसिकली द on the basis of the lead time, the coordination can be made so that there is no risk of stock out or there is no risk of excess inventory or something like that. Okay, so मतलब कि ऑपरेटर ऑपरेशन डिपार्टमेंट को कितना बनाना है, सप्लायर्स कितना दे रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन में कितना है, इन्वेंटरी में कितना है, तो सारे जो आपके पार्टीज है उनके बीच में कोलैबोरेशन जो होना चाहिए on the basis of demand forecasting and all these things can be planned out with this tool. Okay, दूसरा है इंफॉर्मेशन शेयरिंग. इंफॉर्मेशन शेयरिंग मतलब क्या है ना कि वी वांट कि आपके जो सारे पार्टीज है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, सप्लाई चेन के जितने पार्टीज हैं उन सब में एक ट्रांसपेरेंसी, एक कोऑर्डिनेशन और एक सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जो आपका प्रोड्यूसर है, जो आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि अभी इन्वेंट्री कितना है और इन्वेंट्री वाले को पता होना चाहिए कि अभी प्रोड्यूस कितना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले को पता होना चाहिए प्रोड्यूस कितना हुआ है और कितना इन्वेंट्री. मतलब everyone should be transparent with each other and there should be seamless flow of information within to all the parties. Okay, so the real time information sharing should be used and this will help to better coordinate and have the visibility, right. So this can be done. The next is performance metrics. Performance metrics का मतलब क्या होता है कि you should keep some benchmarks कि है ना, at least we should achieve this, this should be the like on time delivery का एक benchmark है कि आप 1 से 2 दिन आगे पीछे कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. It should not be like a week और है ना. तो हर चीज का आप जब अगर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स रखते हो तो आपको पता लग जाता है कि विच एरिया यू आर मिसिंग आउट, है ना. तो दिस कैन ऑल्सो इम्प्रूव, है ना, और दिस कैन हेल्प यू गिव डायरेक्शन फॉर द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एफर्ट, राइट. सो this is the thing for supply chain coordination.
The next was risk and uncertainty management. Okay, so how can the if you remember this question, I've also asked that how can one tackle these challenges. Okay, also discuss on the risk and uncertainty. Here you can see the risk and uncertainty. ठीक है, तो this slide is discussing on the risk and uncertainty. तो risk assessment का मतलब क्या होता है कि you have chosen uh, a reliable supplier, you have chosen a proper location, geographical location, and there is no geographical risk related to that. Okay, the disaster management and all these things are already mitigated and taken into account. Okay, so that is what it is saying. There should be a continuous risk assessment to identify the potential disruption. कभी कोई आगे फ्यूचर में डिस्ट्रप्शन हो उसको पहले से आप आइडेंटिफाई कर लो ताकि you can just mitigate those. Okay, so this can be one thing that can be done. दूसरा आपको पहले से डिस्कशन है कि diversification is the key. Don't rely on one particular supplier. Don't make one particular supplier as the key supplier. अदरवाइज मैंने आपको यूक्रेन इसका आपको दिया था एग्जांपल कि since the country is at war and if your supplier is solely of that country, then even when you don't have anything with that country, okay, with that the economy of the country, but still your company will be suffering a huge loss, right? So you should always diversify the suppliers. You should have the plan B always. You should diversify the transportation routes also. You should like एक अगर एक ट्रांसपोर्टेशन रूट को आप लेकर चल रहे हो और वही जैम लग गया और काफी टाइम के लिए बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट पॉलिटिकल इश्यूज और व्हाटएवर, है ना, then you should have some substitutes. Okay, so that is what it is saying. Don't like diversify your suppliers, your transportation routes, and mitigate the risk associated with the disruption, है ना, कभी किसी एरिया में डिस्ट्रप्शन आ जाए तो उसको आप पहले से मिटिगेट करो. The third is as always insurance. You can purchase the supply insurance for the supply chain disruptions. कभी किसी ऑर्डर को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, then the compensation can be paid with the insurance. Okay, so this is also a good thing that everything cannot be forecasted, things are at risk. तो आप क्या करो कि आप इंश्योरेंस ले लो, जो वैसा रिस्क की असाइनमेंट लगे आपको, you can make take up the insurance and thus you can be relax a bit. Okay, so this can be done to mitigate the uncertainties of the supply chain management risk. Okay, the fifth was regarding the strategic sourcing. What should be, how can we make the strategic strategies? Okay, तो सबसे पहले कि आप एक काम कर सकते हो कि you can I change the slide, it's not visible. Okay, here's the slide. We are discussing slide number 5. So strategic sourcing means आप कैसे strategies बना सकते हो. सबसे पहले you should evaluate your supplier because supplier is the key one, right? If the supplier delays in providing you the material, then the whole of the supply chain will be disturbed, है ना, and ultimately it will lead to the loss for the company and customers dissatisfaction. Okay, so strategic sourcing is one very important thing. So supplier evaluation is one important thing. So you should evaluate your supplier taking into account what quality he provides, what is the cost, is his cost competitive to the others, and reliability and all these things should be checked. Okay, the next is make or versus buy decision. Make versus buy decision we have already discussed कि inbound करे कि outbound करे, है ना, उसको खुद से बनाना है या फिर हमें आउटसोर्सिंग से परचेज करना है. सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, है ना. तो आपको इन हाउस करना है या आउटसोर्स करना है. आप इन हाउस किस चीज को करते हैं, अपने कोर प्रोडक्ट को करते हो, अपने जो आपके इंटेंजिबल जो ये होते हैं पेटेंट वगैरह एंड ऑल दीज थिंग्स जिस पर आपने ले रखी है उसका आप करते हो ना, जो आपका फॉर्मूला आपका डिजाइन है. आउटसोर्सिंग आप उन एक्टिविटीज करते हो जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज रहते हैं ना, राइट, और हेल्पिंग एक्टिविटीज जो रहते हैं, राइट, तो आप करते हो उनको आउटसोर्सिंग, है ना. तो यू हैव टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग दैट. देन सप्लायर कोलैबोरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सप्लायर कोलैबोरेशन भी बहुत जरूरी है कि आपको किस जगह पर कोलैबोरेट करना है, एट व्हाट ट्रांसपोर्टेशन हब इट शुड बी आउटसोर्स और इट शुड बी कोलैबोरेटेड, है ना. तो कोलैबोरेशन विद द सप्लायर टू इनोवेट एंड इम्प्रूव द प्रोडक्ट. ओके, कि आपको जो प्रोडक्ट वो जो ऑर्डर दिया हुआ उसमें कुछ इनोवेशंस भी लाना है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी लाना है थ्रू आउट द टाइम. ओके,
quality and delivery effectiveness. So you need to collaborate, then only. Otherwise, the supplier will always act as a third party and will just do his duty. Rather, if you collaborate or make partnership with the supplier, then he'll feel that it is his own product or it is his own service that he is providing, and thus he'll be uh, like putting the inputs like innovation, putting the inputs like having a proper quality, good quality, है ना, or improve the quality with the time. Okay, so this can be achieved only when the collaboration. तो strategy यही बनानी है. एक तो आप supplier को properly evaluate कर लो, make and buy decisions में proper बिल्कुल you should be very conscious, और उसके बाद supplier collaboration तो आपको बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, then only the things can get smoother. Okay. Next, the discussion was on big data analytics, how you can use the big data analytics. Big data analytics can be used for the demand forecasting. What you can do is you can collect the historical sales data and thus capture the market trend. और उस मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आप जो है डिमांड को एक्यूरेटली फोरकास्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बेटर हो जाएगा, आपका स्टॉक आउट भी नहीं होगा और कस्टमर भी सेटिस्फाई होंगे, है ना. तो बिग डेटा एनालिटिक्स में का फायदा यही है कि आप डिमांड फोरकास्टिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हो. प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मींस यू कैन यूज द सेंसर डेटा कि किस किस जगह पर मतलब रेगुलर स्टॉक आउट या रेगुलर फेलियर्स होता है, आप वहां पर सेंसर्स लगा कर रख सकते हो, एंड दस यू कैन डू द प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स टू शेड्यूल द मेंटेनेंस टास्क, है ना, कि कहाँ कहाँ पर रिक्वायर्ड होगा आपको पहले से पता चले, प्रिडिक्ट कर लोगे, है ना. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, the third is real time monitoring. Real time monitoring का मतलब क्या है कि if you use data analytics and all these technological things, then what you can do is you can track the inventory level. You can use the real time monitoring to track the transportation route, the distribution, the suppliers performance, and everything can be tracked with the help of the real time monitoring system. Okay, and at the end you can just write a conclusion of 2 sentences that okay, so by implementing all these strategies, so the company was facing the issue in inventory management, in this supply risk mitigation and all these things. Okay, so these are the suggestions that has been given, and this company, if they use these strategies like collaboration, partnership and all these things, then they can improve their operational efficiency, and also they can have a longer term success and competitiveness in the market. So that's it. This is how we deal with a case study. This is very important. The case study is very important because it is a compulsory question and it comes for 20 marks in your exam, in your MBA full-time paper. Okay, so this is a compulsory question. So do watch this video at least 2 to 3 times. Okay, take your time. If you have any queries still, you can just write to me in the comment box and I'll be delivering that. Okay, I'll be solving your issue, no problem. So thank you so much. I'll also be providing one more case study in the next video. Till then, bye bye, take care.